Very good. Okay, Alice. Okay, Alice. Okay. Reproduction in lower and higher end. First of all, let's talk something about the topic initially. What do you mean by the term reproduction? अच्छा उससे पहले देख लो इधर with option 8 marks. That means, and there are specific topics which are expected in every year question. Anyways, okay, these are the topics which we are going to cover initially. Asexual reproduction in animals, a very small topic which I am going to take today. Sexual reproduction in animals, and thereafter we will start from tomorrow or whenever the lecture is scheduled. Okay, what is reproduction? What is reproduction? What is reproduction? Reproduction. Reproduction. First of all, what do you mean that? Anyone else? Anyone else from the girls? Reproduction. Formation of new organism from the pre-existing cells or organs. Okay. Formation of a new individual is partially correct. Formation of a new individual giving birth. Formation of new individual from the pre-existing one. Anyone else wants to improvise? Last bench.
रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अच्छा आप उसमें एक और थी छोड़ दिया उन्होंने रिप्रोडक्शन क्लास में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं पता रिप्रोडक्शन बोलने नहीं आ बैठना है दर्द हो रहा है reproduction she said partially correct. Have anyone seen a human giving birth to a donkey? I can see multiple over there. But the main reason, see, reproduction is giving rise to and giving birth to a new individual from the pre-existing one of its own kind. You will never see a dog giving birth to a chicken. A human giving birth to a donkey. No, not possible at all. So this term which you missed, just of its same kind, of the same species you can. हम define नहीं कर रहे, हम समझ रहे हैं. Reproduction is giving birth to a new individual from the pre-existing one. Understand the three things. Giving birth to a new individual. New individual that is life from the pre-existing पहले से होना जरूरी of its own species or own type. समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्शन में अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में अगर ये तीन कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका डेफिनेशन बनता है. Reproduction is giving birth to a new individual, new organism or offspring from the pre-existing one of its own kind, of its own species, of its own kind, whatever you want. Now, see, what is the basic difference between reproduction and other systems? You have central nervous system, your brain, spinal cord, nerves, yes or no? You have lungs, trachea, this, that, blah, blah, blah. You have bones, musculoskeletal system, yes or no? You have kidneys, urinary system. What is the basic difference between reproductive system and other systems? And second question is, why you need reproduction? Why? क्यों जरूरत है reproduction? Yes. Raise your hand if you want to answer. Continuity of the species. Yes. Okay. On. सेम हो गया ना? और कुछ? बस एक ही है कंटिन्यूटी ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ाना है बस. That's it. First of all, to make up the population demography. What is demography? अभी डेली 10 लोग मरते तो वो 10 लोग का बैलेंस करना पड़ेगा. इसे हम कहते हैं डेमोग्राफी. स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी. जो डेमोग्राफिक साइकिल है तो उसको मेंटेन करना है. जितने डेथ हुई उतनी बर्थ होना जरूरी, वरना वो आपने पढ़ा होगा ना साइकिल. कौन सा साइकिल होता है वो? एक साइकिल था ना, ईवीएस में पढ़ा था आप लोगों ने.
food chain hamper होता है. First, demographic. Second, to make up for the continuity of the species. And third is mutation. If you see down the line, just go back to your grandfather. Look at their physique. They had a hairy body, broad chest. But down the line, in this era, you will never see a single male with that hairy body. अगर आप देखो कि 10 साल पहले 25 साल पहले के जो लोग थे उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा कि डाउन द लाइन हाइट कम होते गए. Yes or no? So according to the need, जैसा एटमॉस्फेयर, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा कंडीशन पर आते गया, वैसे वैसे हमको चेंज होना जरूरी. अगर आप चेंज नहीं होगे तो आप खत्म हो जाओ. दिस इज अ रूल. यस और नो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ाओ. आप अपने मॉम डैड के जैसे हो वही नहीं हो. यस और नो? तो ये जो चेंज कैसे लाया जा सकता है? और क्या है? These are some very gross points. I'll come to this point again when we are done with sexual and asexual reproduction. Now my second question: what is the difference between reproductive system and other systems? What is the difference between reproductive system and other systems? Yes. आपको क्या लग रहा है reproductive system और other system क्या difference? आंसर पता है लेकिन बोलना नहीं. Rishu? Reshma, sorry, Reshma. Common sense. Yes, reproductive system involves germs. Okay, some partly correct. Anything else? But basic क्या है? Common sense use करो. Common sense, which is not so common. Manas. Dermatologist. कहाँ गया आपका? कोई तो कार्डियोलॉजिस्ट है. क्या डिफरेंस है बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सोशल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड. रिप्रोडक्शन इज द पॉइंट. क्या हो गया? ये ठीक है. ओके. एनीवेज, हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? रिप्रोडक्शन में माइटोसिस मेयोसिस यूज होता है और नॉर्मल सेल डिवीजन में माइटोसिस यूज होता है. Yes, reproduction is the only system. Reproduction involves formation of gametes, which is called as gametogenesis. यहाँ पर आप पढ़ रहे हो gametogenesis, पढ़ोगे. Gametogenesis means formation of gametes, and formation of gametes involves meiosis. आपने पढ़ा होगा माइटोसिस meiosis में 11 और उसी में पढ़ा था कि germ cells involved होते हैं. और क्या difference है reproduction? The first and foremost thing is the reproductive system is not necessary for your own survival. आपको जिंदा नहीं रखता, आपके ऑफस्प्रिंग के जिंदगी के लिए, आपके फ्यूचर बेबीज के लिए, not for you person. We have seen many cases where the penis is amputated and the patient is surviving. We have seen many cases where the entire uterus along with the ovaries have been removed, but the female is surviving. So reproductive system is not necessary for your own survival per se, but it is necessary for the survival of your future offsprings. Yes or no? हाँ या ना? समझा? Second most important point is how many eyes you have, Muni? बेटा आपका नाम? Sara, how many eyes you have? How many lungs you have? जोर से बेटा सारा. How many trachea you have? One. Sara, how many kidneys you have? Two.
How many ureters you have? Anyways, last answer. Moral of the story is other systems are same in male and female, but the reproductive system is the only system which is different in male and different in female. समझ में आया? So two basic, which is very common, which was very easy to understand. Okay, first, it is not necessary for your own survival per se, but necessary for the survival of your future offspring. First. Second, it is different in males and females. Males have different set of reproductive system. Females have different set of reproductive system. This criteria, whereby humans have two different sexes, is called as sexual dimorphism. Sexual matlab sexual, di matlab two, morph stands for morphology. सुना है ना? Morphology matlab study of structure. Di matlab two, morph matlab structure. Sexually humans के पास दो structure है, इसीलिए we call it as sexual dimorphism. समझ में आया? Easy. Let's now move on to the further topics. First is, see, reproduction is basically divided into two. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. First, let's talk something about asexual reproduction. Asexual reproduction means without sex, simply. That means without involving male and female partners. A single parent is sufficient to give rise to a new offspring in case of asexual reproduction. समझ में आया? Asexual reproduction में you don't need two parents. There is no formation of gametes. There is no fusion of gametes. And single parent is sufficient to give rise to daughter cells. And the last and foremost important thing is the daughter cells are lookalikes. That is clones of the parent. क्योंकि parent ही divide होकर के daughter बनता है. जिसको आप clone बोल सकते हो, identical बोल सकते हो, same बोल सकते हो, not similar. As it is, xerox copy, जिसको आप बोलते हो ditto, D-I-T-T-O. तो जिस तरह parent रहते हैं, same as it is. आपको मैं बोलूंगा इनकी नानी की जैसी है, इनकी आंख इनके मामू की जैसी है, फुलाना इसके जैसी. That means आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, लेकिन सेम नहीं. You look somewhat similar, yes or no? हाँ या ना? आप similar हो, same नहीं, लेकिन asexual reproduction में as it is, xerox copy you can understand. So we can say that the offsprings in asexual reproduction are clones. समझ में आया? तो asexual reproduction, most important, one of the most important topic which we are starting is differentiation between sexual and asexual reproduction. It will be asked somewhere. It will be asked, I'm sure. पूछा जाता है. So first important point is sexual reproduction involves only single parent. There is no formation of gametes, no fusion of gametes. The daughter cells are clone or identical or exactly same as that of parents. समझ में आया? फिर बाकी का आपको ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आना ही चाहिए. फिर फोर्थ पॉइंट आप अपना हिसाब से वो घुमा फिरा करके आप लिख सकते. Just remind me once when you guys are going for 12th, we'll have a lecture on how to write the questions, how to attempt the questions, and how to write the answer. ये घुमा फिरा के पॉइंट्स कैसे बढ़ाना होता है, जिसको नहीं आता उनको. Anyways, तो अभी asexual reproduction में क्या क्या आता है? Asexual reproduction में first is, इसमें दिया नहीं है, first is binary fission. बाइनरी फ्यूजन यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप सुनोगे ये टर्म.
What is binary fission? एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, हैफेजार्डली दो में डिवाइड हो अचानक से। आप माइटोसिस को इससे कंपेयर मत करो। माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है ना? ऐसे नहीं, बाइनरी फ्यूजन एक सेल है, दो में डिवाइड हो गया, हैफेजार्ड। समझ में आ गया? दिस इज बाइनरी। सेकंड इज सॉरी, अब आपकी टेक्स्ट में जेम्यूल फॉर्मेशन। व्हाट इज जेम्यूल? जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स। जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो। Asexual reproduction is a common method of reproduction among lower animals which does not involve either meiosis or formation and fusion of gametes. 3 पॉइंट यहीं पर मिल गया. First, it does not involve meiosis. It does not involve formation of gametes. It does not involve fusion of gametes. समझ में आ गया? It involves only single parent. The daughter cells are clones. 5 points हो गए? Yes. बस है? Example sequence. Example में first example is gemule formation. Other is binary fission. Gemule formation. Gemule is an internal bud. एक सेल है, उसके अंदर ही ब्रेकडाउन हो रहे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अंडर और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सेल बर्स्ट होता है और बहुत सारे बर्ड रिलीज होते हैं। समझ में आया? इजी है। Gemule is an internal bud formed only in sponges to overcome unfavorable conditions. Its structure includes microphyll, spicule, inner layer, arachiocytes, and outer layer. It possesses an asexually produced mass or aggregation of dormant cells known as arachiocytes. अच्छा, totipotent. What do you mean by the term totipotent? Totipotency पढ़ा होगा ना? क्या है? Plants में पढ़ा होगा। ह्यूमन स्टेम सेल्स का भी प्रॉपर्टी है टोटिपोटेंसी। हाँ, a cell can divide, differentiate into any damn cell, any type of cell. That is a property called as totipotency. तो ये जो small buds है ना, इसको हम arachiocytes बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो एक लेयर बनता है ना बाहर, एक लेयर, ये सब जाने दो, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, बीच वाला रहने दो। Internal buds are called as arachiocytes, while the outer layer, page number 18. इधर ही आ जाओ, arachiocytes और correct down. Line number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth line. The arachiocytes, one is read it. पढ़ो से. The arachiocytes get. Arachron नहीं, arachiocytes. Arachiocytes get coated by a thick resistant layer of secretion by amoebocytes. समझ में आ गया? एक लेयर बन जाता है इनके ऊपर जो कवरिंग है ना, ये क्यों जेम्यूल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? तो ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ये बर्स्ट आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट, जेम्यूल्स आर इंटरनल बड्स. They are a type of an asexual reproduction. They are formed to overcome unfavorable conditions. Internal buds or gemmules are also called as arachiocytes. Arachiocytes are covered by a thick layer of secretions by amoebocytes. When favorable condition appears, this entire thing will burst out, releasing multiple arachiocytes in their time. समझ में आ गया? जेम्यूल समझा? एग्जाम्पल ऊपर था ना, ऊपर एग्जाम्पल था स्पॉन्जेस. अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्जेस, अमीबा. अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होगा. होमवर्क फॉर यू गाइस.
मिनिमम 2 एग्जांपल्स ढूंढ करके लाओ. एक प्लांट किंगडम से लेके आओ. प्लांट किंगडम में भी पढ़ोगे. जमीन फॉर्मेशन. जमीन फॉर्मेशन समझ में आ गया? इजी. शुड आई मूव अहेड नाउ? बडिंग वेरी इजी. इधर देखो हाइड्रा. Morphologically it is present right from birth, but it becomes functional only and only after your puberty. Beta, yeah. It becomes functional only and only after puberty. समझ में आया? So there are certain points which is given in your text. The first point is, if you divide your lifespan, it is divided ideally into two areas. The first is juvenile phase. जुवेनाइल का मतलब बचपन, childhood. And after juvenile phase, you hit the puberty. You start developing your secondary sexual characteristics. Yes or no? हाँ या ना? So this secondary sexual characteristics, once they are completely developed in your body, now you land up into second phase of your life, which is called as reproductive phase. Thereafter you are capable enough of reproducing. तो अगर आप रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आपकी लाइफ को डिवाइड कर रहे हो, तो आपकी लाइफ के दो ही पार्ट, एक बचपना, एक रिप्रोडक्टिव, जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव. और जो बीच में पॉइंट आ रहा है, जहां से आप जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहे हो, उस पॉइंट को आप प्यूबर्टी बोलते हो. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? PUBERTY. क्या बोलते हो? प्यूबर्टी इज अ पॉइंट whereby, जिसको आप एडोलेसेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, the same thing is puberty. दिया भी है मेल्स में जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, शोल्डर्स बिकम वाइड, लो बेस वॉइस, वायबल स्पर्मेटोजोइड द सेम. फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ स्कल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर. समझ में आ गया? These are all secondary sexual characteristics. जब से ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, you are into reproductive phase. You are capable enough of reproducing. समझ में आया? टेक्स्ट पे तो बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग. Second thing, you have seen, अच्छा, you have seen कि specific season में specific organisms breed करते हैं, reproduce करते हैं. देखा? Yes. जैसे कि रेनी में फिशेस है ना, बट ह्यूमंस का ऐसा फिक्स है क्या कि सिर्फ विंटर में ही रिप्रोडक्शन होता है, समर में ही होता है? So there is something called as seasonal breeders and continuous breeders. Continuous breeders means those who reproduce irrespective of the season, all throughout the year, anytime during the year, any month, any day. समझ में आया? And one are seasonal breeders, those who reproduce only and only in specific seasons. Only and only in specific seasons. Let us stand up. What do you mean by that term, sexual reproduction? Person list. पीछे sexual reproduction.
आवाज नहीं आ रही। बेटा आप hermaphrodite का definition एक ही में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट। Is sexual reproduction? Partially correct. Reproduction which involves formation and fusion of gametes from two different individuals of the opposite sex. Sexual reproduction. Yes or no? Yes. Correct? Yes. Sit. What is asexual reproduction? तो खड़े बेटा पता है मैंने क्यों आपको खड़ा किया? लेक्चर के स्टार्टिंग से आप लेक्चर में नहीं। क्या नाम है? पूरा नाम? शेर कपूर। पढ़ना नहीं, बायोलॉजी पसंद नहीं, बायोलॉजी पसंद नहीं। I understand biology पसंद। टीचर पसंद नहीं। No option. You have to verify for the entire chapter. Chapter पसंद नहीं। आपका क्या है भाई? बोलो asexual reproduction. I know this what I will say. It does not involve meiosis. Sure? Or single parent cell, single parent cell जो भी हेल्प करे थोड़ा अच्छे से हेल्प करे। Anyone? बेटा asexual reproduction. Next. बच्चा अकेले जरा बिजली क्या है? This hour was so active. बोलो what is asexual reproduction? Read the जोर से। क्या समझा? क्या समझा? समझाया ना मैंने अभी? हाँ क्या समझा? अब्दुल्ला ट्रांसलेट करने। Asexual reproduction is a reproduction whereby there is no formation of gametes, no fusion of gametes, non-involvement of two sexes. A single parent is sufficient to give rise to a new individual. The individual that is offspring, that is the children, daughters, are clones. Example: gemule formation, budding, fragmentation, binary fusion. That's why repeat किया. Sit everyone. So now let's start with human reproduction. It is half an hour and a half. Human reproduction. See, जैसा कि मैंने कहा, human reproduction, you have two sets of reproductive system. Males में अलग, females में अलग. One is primary sex organ, by which you define कि ये male है, ये female है.
एंड देयर आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो आपके प्यूबर्टी पे डेवलप होते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ. पेनिस एंड स्क्रॉटम इन मेल्स, vagina and vulva in females. Primary sex organ present in the right from the birth. But the secondary organs, as in testicles, testis, ovaries, and other sort of things, internal organs as well, internal sex organs, these are termed as secondary sexual organs, which develops only and only after puberty. समझ में आया? अब एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनो. Testes in males are gonads. Yeah, gonads in males are testes. Male gonads are testes. Female gonads are ovaries. फीमेल में जो गोनाड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओवरीज. क्या है फीमेल में? समझ में आया? गोनाड्स इन मेल्स आर. क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं पता है? जब मैंने नीट दिया था ना, तो ये मुझे एमसीक्यू आया था. नीट भी आया था, एसोसिएट सीईटी में भी आया था, डीडीपी सीईटी में भी आया था. गोनाड्स इन मेल्स आर, गोनाड्स इन फीमेल्स आर. अब ये टेस्टिस और ओवरीज आर द पॉइंट, आर द स्ट्रक्चर्स जहां पर गैमेट बनता है. तो गोनाड्स, हाउ यू डिफाइन गोनाड्स? गोनाड्स आर द पॉइंट जहां से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है और जहां पर आपका गैमेट्स बनता है. टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ओवरीज में एग सेल फॉलिकल्स बनेंगे. गोनाड समझा? समझा या नहीं? It is actually attributing the secondary sexual characteristics. Easy? Okay. Now let's start with male reproductive system. Male reproductive system में सबसे पहला पार्ट testis. अभी testis, again the first thing, gonads in males. Testis are the point which, testis are the part which secretes sex hormones. Testis are the parts which develop male gametes. अब ये बनते कहां पर? जब आप इंट्रायूट्राइन लाइफ में रहते हो ना, आपके आप अभी डिलीवरी भी नहीं हुई, आप आपकी मदर के वोम में, मेल्स की बात करें, तो टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होते. कहां पर डेवलप होते? लेकिन जैसे ही टुवर्ड्स 9 मंथ आने लगता है, स्लोली स्लोली एवरी 2 वीक्स वो एक इंच नीचे आते रहते हैं. और जस्ट प्रायर टू द बर्थ 38 वीक्स हिट करना है प्रेगनेंसी को. जैसे ही प्रेगनेंसी 38 वीक्स को पहुंचती है, immediately testis descends down outside the abdominal cavity into a bag, skin bag called as scrotum. Called as scrotum. दिया नहीं है. Second thing, they are derived from mesoderm. अभी आगे आप पढ़ोगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. हाँ, मिडल, आउटर, इनर. तो मेसोडर्म से आपका टेस्टिस डिराइव. इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. समझ में आया? ये अभी बहुत शॉर्ट में दिया. Testis first thing develops in abdominal cavity during the pregnancy, but in the later pregnancy it descends down into the scrotum by a canal, through a canal called as inguinal canal. Called as inguinal canal. Called as inguinal canal. See, आपको यहाँ से बाहर जाना है तो एक रास्ता है, एक दरवाजा है. Yes or no? आपको क्लासेस के बाहर निकलना है क्लास. तो इसी तरह टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम में आना है, तो एक रास्ता है कैनाल, जिसको हम इनग्वाइनल कैनाल बोलते हैं. क्या कहते हैं? समझ में आया? आइडियली टेस्टिस कहाँ डेवलप हुआ? एब्डोमेन में. लेकिन डिसेंट कहाँ हुआ? स्क्रोटम में, थ्रू अ कैनाल कॉल्ड एज इनग्वाइनल कैनाल. समझ में आया? इन द लास्ट प्रेगनेंसी, लेटर प्रेगनेंसी. लेकिन कभी कभी टेस्टिस डिसेंड नहीं होता.
इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म. दैट इज द अदर पार्ट ऑफ दिस. टेस्टिस समझ में आया? टेस्टिस आर गोनाड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन which secrete sex hormones, which forms spermatozoa. हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं? They are formed in abdominal cavity during the pregnancy, descends down just prior to the end of the pregnancy through a canal called as inguinal canal. They are not present in abdominal cavity. They are present outside the abdominal cavity in a pouch called as scrotum. समझ में आ रहा है या नहीं? अब ये क्यों किया गया? The first and only reason is कि abdomen में आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है. टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं. क्या बनाते हैं? Which is male gamete. Yes or no? Yes. टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, मेल गैमेट भी बनाते हैं. हाँ या ना? तो ये मेल गैमेट बनाते हैं. ये मेल गैमेट बनाने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है. हाई टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता. हाई टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजोआ वायबल ही नहीं होते. तो अगर टेस्टिस एब्डोमेन में रहेगा, वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो स्पर्मेटोजोआ सही से बन पाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस सही हो पाएगा? हाँ या ना? इसीलिए क्या किया गया है कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा गया है एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम. स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ स्किन. इट हैज 5 लेयर्स. 5 लेयर होते हैं उसमें, और उसमें आपका टेस्टिस सस्पेंडेड है. अगर आप यहाँ पर देखोगे टेस्टिस सस्पेंडेड है. एक बॉल को आप एक थ्रेड से टाई करके से बॉल नीचे सस्पेंडेड रहता है, वैसे टेस्टिस सस्पेंडेड है. ओके, लेट्स कम टू स्क्रोटम नाउ. टेस्टिस समझ में आया? टेस्टिस का ओवरऑल व्यू मैंने दे दिया. इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल तो हम बाद में करेंगे. स्क्रोटम, a pouch, loose pouch of pigmented skin. Usually the skin of the scrotum is darker than the normal complexion of the male. This is very normal. Okay. Second, lying behind the penis. Okay. It is divided into right. The entire scrotum is divided into two halves, right and left. Right involves right testis, left involves left में left testis. समझ में आ गया? Second, हाँ, tunica dartos. Dartos muscle is the most important muscles of the scrotum, जो आपके scrotum को protect करती है. Temperature of, ये read करो जोर से, everyone. क्यों 2 to 3 डिग्री लेस है than the normal body temperature? हेलो हेलो साढ़े 12 बजे. हाँ, 2 to 3 degree less than the normal body temperature. Why you need 2 to 3 degree less for a normal spermatogenesis? Because spermatogenesis cannot occur at higher temperatures. This is the reason why testes are present in the scrotum, but the temperature is 2 to 3 degree less than a normal body temperature. समझ में आया? Okay? That's all. scrotum समझ में आया नहीं? Now go back to your testis. Let's talk something about testis first. सिर्फ testis और scrotum आज हम समझते हैं.
टेस्टिस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो it is not oval, it is not circular, it is more over compressed, or you can say egg shape. Yes or no? दिख रहा है या नहीं? Complete round नहीं है वो. It is compressed angular posterior. That is like a top. And it is covered by a layer called as tunica albuginea. क्या? अच्छा 3 लेयर दिया है. Externally, testis is covered by 3 layers. Tunica vaginalis, tunica albuginea, and tunica vasculosa. Outer layer is called as tunica. सिर्फ टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर्स है. कितने लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका. जोर से. मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका. अभी हर लेयर का एक इंपॉर्टेंस. Vaginalis, it is the outer layer. It is always tough, fibrous, protective in nature. Albuginea is a middle layer. Middle layer, supportive, moreover made up of connective tissues. Tunica vasculosa, it is the innermost layer, very sensitive, rich in blood supply. नाम में है ना vasculosa, vascularis. आपने कहीं पढ़ा है? अच्छा, एक टर्म याद रखना. साइनोवियल जॉइंट में आपने पढ़ा होगा कि आपका जो कार्टिलेज है is avascular. पढ़ा था ये? अवेस्कुलर का मतलब उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. यहाँ पर देखो ट्यूनिका वैस्कुलोसा. कुछ सिमिलर लग रहा है क्योंकि ये इनर लेयर है. दिस पार्ट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, इसीलिए इस लेयर का नाम रख दिया ट्यूनिका वैस्कुलरिस या वैस्कुलोसा. समझ में आया? इजी. एक बार रीड करो जल्दी से. Tunica vaginalis, outer protective layer. Tunica albuginea, middle layer formed of collagenous connective tissue supporting her. Tunica vasculosa, inner layer rich in blood supply. Okay. Now each. अच्छा इसको जाने दो. If you see now, each testis is divided into multiple. This is your testis. Your entire testis is divided into multiple lobules. Multiple lobules. जोर से. बहुत सारे कंपार्टमेंट है. एक ही टेस्टिस की बात करो. पहले तो हमने देखा कि बहुत सारा 3 लेयर है. हाँ या ना? फिर अब अंदर जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स. समझ में आया? अब ये लोब्यूल्स के अंदर एक एक लोब्यूल. अब ये कितने लोब्यूल्स है? 200 to 400. 200 to 400. एक टेस्टिस के अंदर 200 to 400 लोब्यूल्स. और हर लोब्यूल के अंदर 2 to 4 टिब्यूल्स है. 2 to 4 टिब्यूल्स. ये दिख रहा है? दिखा? Yes or no? Yes. पहले बहुत सारे लोब्यूल्स, हर लोब्यूल के अंदर टिब्यूल. यस और नो? अभी सारे टिब्यूल एक जगह ज्वाइन हो रहे हैं. यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं? टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, एक्सटर्नली, इंटरनली एंड मिडल लेयर. फिर उसके अंदर अगर आप टेस्टिस को देखोगे, इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपार्टमेंट्स which are called as lobules. These lobules contains
2 to 4 टिब्यूल्स, ईच की बात करो, हर एक लोब्यूल की बात करो, 2 to 4 टिब्यूल्स होते हैं। उस टिब्यूल का नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या नाम है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। जोर से, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। समझ में आया? अब ये एक कंपार्टमेंट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक कंपार्टमेंट है, देखो 1 2 3 टिब्यूल दिख रहे हैं। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस टिब्यूल। समझ में आया? समझ में आ रहा है? yes. अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच बीच में अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं आपको? बीच में अलग से सेल है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? या लेडिंग सेल। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच बीच में, 2-3 सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है। These clusters of cells are called as interstitial cells of Bhiwandi. समझ में आया? Any doubts? टेस्टिस के हम कितने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जा रहे हैं? अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल को गौर से देखो आप, बीच बीच में ऐसे स्लेंडर टॉल सेल्स दिख रहे हैं आपको? आया ना? कुछ ये टॉल सेल्स दिख रहे हैं बीच बीच में, ये सेल्स, ये टॉल। अच्छा इसे देखो, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको? बाहर के लेडिंग सेल्स हो जाना, दिस इज नथिंग बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बाहर का है। ये पूरा बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे दो तरीके के सेल्स दिखेंगे आप, एक टॉल स्लेंडर कॉलम लाइन और एक छोटे छोटे सेल्स। दिखे या नहीं? These small these are nothing but germinal epithelium. These are nothing but germinal epithelium. समझ में आ रहा है या नहीं? And in between the germinal epithelium you will see tall slender cells which are called as Sertoli cells. क्या है? Sertoli cells or nerve cell or sustentacular cells. ठीक से समझ रहे हैं नहीं? Stand up everyone. Raise your hand. नहीं कर. Sit. Keep your ऊपर हाथ. लोगों को हैंड और हैंड पे फर्क नहीं पड़ता. Anyways, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? आप खड़े हो जाओ, बस खड़े रहो. अच्छा, if you will see, hands up. ओवर स्मार्ट लोगों की जगह नहीं है मेरे क्लास, ओवर स्मार्ट लोगों के लिए. Anyways, तो हमने क्या देखा? लेट्स गो बैक. टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट है, फिर टेस्टिस के ऊपर 3 लेयर है, ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुमिना, ट्यूनिका वेस्टिरोसा. फिर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, लोब्यूल्स. उस लोब्यूल के अंदर 2 से 4 टिब्यूल्स है, which are called as seminiferous tubule. अब ये seminiferous tubule का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर 2 तरीके के सेल्स होते हैं. One tall slender cells which are called as Sertoli cells or nerve cell or sustentacular cells. I'll come to each and every term. And in between these tall cells you will see small cells called as germinal epithelium. अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस आपने सुना ना, टेस्टिस से
स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और फिर आपने कहीं सुना होगा कि गैमेट्स जर्म सेल से बनते, किसी ने कहा था उधर, है ना? तो ये आपकी जर्म सेल्स आ गए, हम टेस्टिस के अंदर है, हाँ या ना? तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो जर्माइनल एपिथेलियम है, यही आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। समझा? The germinal epithelium, which is resting on the basement membrane of the seminiferous tubule, sooner or later will develop itself into a mature spermatozoa. समझा? हाँ या ना? I'm repeating my statement. The germinal epithelial cells, which is resting on the basement membrane of the seminiferous tubule in the testis, sooner or later will land up into a mature spermatozoa. समझा? अब हिंदी में, जर्माइनल एपिथेलियम जो आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है, वही आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ बनने वाले हैं। समझा? तो अच्छा, इन बीच में जो बड़े बड़े सेल्स, उनका काम क्या है? उनका काम है इन छोटे छोटे स्पर्मेटोजोआ की नर्सिंग करना। आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपको दवाई कौन देता है? इंजेक्शन कौन लगाता है? आप खाना खाए ध्यान कौन देता है? आपके लिनन कौन चेंज करता है? गॉड बॉयज। एनीवेज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपका ध्यान कौन रखता है? यस और नो? तो इसी तरह ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। इसीलिए सिर्टोली सेल्स को नर्व सेल भी बोलते हैं। समझा या नहीं? सिर्फ समझा? एनी डाउट्स? पक्का? हिस्टोलॉजी समझा? अब हम इसको रब कर रहे हैं और आगे का आपको रीड करना है। चलो, each testis is divided into 200 to 300 testicular lobules. याद आया? Yes. Each lobule has 1 to 4 tightly coiled seminiferous. याद आया? Yes. Okay. Seminiferous tubule is internally lined by layer of cuboidal germinal epithelial cells. Yes. Spermatogonia है, आगे जाके spermatozoa, and few large pyramidal cells called as और याद रहेगा? The germinal epithelial cells undergo gametogenesis to form spermatozoa. Sertoli cells provide nutrition to the developing. ठीक है? ये अभी जाने दो। इतना समझ में आ गया? रिवाइज करें? नेक्स्ट टॉपिक ले। ओके, हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। हमने देखा 2 पार्ट्स ओनली, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। बट टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज गोनाड इन मेल्स। यस और नो? यस। टेस्टिस, व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोनाड? Why it is called as gonad? Because it secretes male sex hormone, it develops male gametes और it forms male gametes. समझ में आ रहा है या नहीं? इसीलिए हम उसको गोनाड्स बोलते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं? कहाँ डेवलप होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। डेवलप कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन बाद में डिसेंड कहाँ होते हैं? स्क्रोटम, which is outside the abdominal cavity. क्यों outside the abdominal cavity? To maintain 2 to 3 degree less temperature than the normal body temperature. क्यों इतना कम टेम्परेचर चाहिए? For spermatogenesis. Spermatogenesis cannot occur at higher temperature. इसीलिए जो लोग लैपटॉप्स वगैरह लैब पे यूज करते हैं या जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग, you guys may land up into infertility. क्यों? देखा ना? समझा या नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एक केस है मेरा नहीं है,
मेरे medical case in terms of if a doctor is talking about case means patient. अच्छा testis जो है ना, just see this thing. Can everyone see this? ये scrotum है, which is divided into two, और इसमें testis होती है. Yes or no? Testis ऊपर attached है, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन नीचे testis is connected to scrotum by a tough band, called as gubernaculum. जोर से gubernaculum. A male may jump, play football, play kabaddi, or run like anything. तो चांसेस है कि टेस्टिस तो ऐसे सस्पेंडेड है ना, चांसेस है कि टॉर्शन हो जाए टेस्टिस का, इधर घूम जाए या इधर घूम जाए, जंप करो तो ऊपर आ जाए फिर नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. अगर ऐसा हुआ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल कंडीशन व्हिच अ मेल विल एनकाउंटर इन हिज लाइफ. तो इसीलिए टेस्टिस को एंकर करके रखता है ये gubernaculum. Gubernaculum is a tough small band which is anchoring the testis to the scrotum, जो टेस्टिस को अपनी पोजीशन पे रखता है. अब एक केस, a patient, elderly, not an elderly patient, mid-aged patient, athlete, football player, due to some mishap क्या हो गया, इसका एक gubernaculum कट हो गया and the testis went into torsion. पूरा टेस्टिस टॉर्शन में चले. A female during the delivery, normal delivery of the baby, जितना स्क्रीन करती है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा वो बंदा स्क्रीन कर रहा है, क्योंकि इतना सीवियर पेन था. And the entire testis turned out to be black because of necrosis, और उसका पूरा एक्सटिर्पेशन कर निकाल. सिर्फ एक छोटा सी बैंड which is hardly half an inch, but understand the importance. अगर वो नहीं रहेगा तो टेस्टिस टॉर्शन में चले जाएगा and boys will understand the pain. It is very painful condition, otherwise nothing to laugh at. समझ में आया? तो gubernaculum, hand nature for gubernaculum, समझा gubernaculum? Let's now revise. Gonads in males are testis, two testis. अच्छा dimension मैंने नहीं बताया. 4 to 5 centimeter into 3 to 4 centimeter into 2 to 3 centimeter. नहीं समझा? टेक्स्ट बुक ओपन करो. आपको ऐसे लिखना है. Because with the age wise, अच्छा, the size of the testis varies with respect to age and with respect to physique. Physique मतलब body. Height ज्यादा तो testis का dimension भी ज्यादा. Only testis. ठीक है? Page number 20. Read करो dimension. Dimension 4 to 5 centimeters long. 4 to 5 centimeter long. 2 to 3 centimeters